Do you see the screen? Yes, sir. Okay, so uh, we have learned so far the what you call the waveform generation, making use of the nonlinear application of op amp and OTA. We generated waveforms which were non-sinusoidal, right? And uh, I hope you remember the instance that one block was which was a Schmidt trigger. It was producing the square wave, and this output was fed to the integrator, which was then converting this square wave into the triangular wave. And then this triangular wave again becomes part of the input to this Schmidt trigger so that it generates again the square wave. So what you have right now, that here you get the triangular wave, here you get the square wave, correct? And now for varying the frequency, this being the integrator, this being the integrator, इसकी जो RC components थे, resistor and the capacitor, they were responsible for varying the frequency. As far as the amplitude is concerned, amplitude here was plus minus eta VCC, and here it was plus minus VCC if this is the Schmidt trigger. So we have seen these two waveforms. As you can see clearly, that here the input to Schmidt trigger is triangular wave, and therefore, if this is the input, if the output is a square wave, there is no proportionality. There is obviously no proportionality. Proportionality means anything, the output follows the input, and there is no correspondence. Input is triangular wave, the output is a square wave. Therefore, it is obviously operating in non-linear fashion. There is no linear relationship between input and output. So far as integrator is concerned, integrator is by the way a linear circuit, where if a constant input is given, it is integrated. So for the negative input, integration is positive going, positive RAM, and for positive input, integration is negative going RAM, right? So this is a typical, application where you see the linear and nonlinear blocks both together. They are doing the wave shaping in the sense that this integrator is shaping a square wave into the triangular wave, and a Schmidt trigger is shaping triangular wave into the square wave. But ultimately, what you get is non-sinusoidal waveform generation, square wave and triangular wave. There are other circuits also where which if you make use of, for instance, if you generate rectangular waveforms using 555 timer IC, 555 timer IC, if you make use of for realizing a stable multivibrator, then you can obviously generate waveforms which have you know T on and T off different, right? So you have the possibility of setting T1 and this T2, controlling these two times independently, right?
And now if this is given to any circuit which generates triangular wave, you can imagine what kind of triangular wave will be generated. Suppose T2 is causing the positive रैम, अगर T2 से पॉजिटिव रैम बन रहा है, T1 से नेगेटिव रैम बन रहा है, तो you can easily imagine what kind of triangular wave we are going to have. The triangular wave that we will have will be something like this. Right? And if I make T1 larger than T2, then this triangular wave will be, having a shape which is something like this. So this one is called forward sawtooth. This one is called reverse sawtooth waveform. So this is another interesting waveform, another class of the triangular waveform where the forward rise time and fall time. Here, the rise time is larger compared to fall time. In this case, rise time is smaller compared to fall time. Accordingly, you can have two different names, the forward sawtooth and reverse sawtooth. Correct? So now you see the waveforms. The waveforms that we have now seen is a square wave having T on and T off equal, right? We have seen also correspondingly the triangular wave, right? We have seen just now we have seen that there is this pulse, the pulse having or the rectangular wave which has T1 and T2 as not equal. And if this is fed to an integrator, then it results obviously into a waveform which is having different rise time and fall time and can be named as forward sawtooth or the reverse sawtooth. Correct? Question now is that these waveforms, and also you know that these waveforms frequency and amplitude can be played with by careful use of the RC values and also the amplifier. Correct? The other interesting waveform which we most often make use of is the sinusoid. So this sinusoidal waveform, how it can be generated, this is what is our now the task. Okay. So I hope you know very well that in some electrical circuits, it is not difficult to come across a differential equation like this. Correct? This you can get either by writing the loop equation or maybe the node equation. I hope you agree with me. Second order differential equation बनाना बहुत मुश्किल नहीं. If there is an RLC circuit or there is some second order RC circuits having more than one capacitor, right, we can get this. And this circuit, if you try to find out, you can also write this in as you may recall, you may write this in this form: s square plus twice zeta omega n s plus omega n square equal to 0. And for this circuit, you can also plot the pole 0. You remember this? I have 28 students right now in the class. Shashank Bharadwaj, you remember this? Yes, sir. That by
playing with the value of zeta, and zeta value जो है वो RLC की value से manage की जा सकती है. Zeta, omega n, this can be managed with the by varying the RLC values, isn't it? So when you and you already know that when zeta is 0, the poles of this system would be on the imaginary axis. Is that correct? Yes, sir. When zeta is increased from 0 to 1, it moves from this towards this side. इसका movement direction ये होता है, arrow आप देख रहे हो, right? This happens when zeta is actually is greater than 0 but less than 1, right? And these poles, they will finally coincide here. यहाँ पर एक double pole होगा. ये situation कब आएगी? This will happen when zeta is equal to 1. Is that correct? Yes, sir. Is that correct? Correct. Yes, sir. And if I now further increase zeta, then what happens that the pole splits and it moves left and right. एक pole इधर निकल जाएगा, एक pole इधर निकल जाएगा. So that's the situation when ये situation और ये situation ये कब होगी? When zeta is greater than 1, right? Here zeta is 0. Zeta is 0. Right, if I draw the waveform at zeta 0, response of circuit would be a sine wave of constant amplitude. And of what frequency? Omega n. Is that correct? Yes, sir. And when zeta is between 0 and 1, sine wave एक damped sine wave बनेगी. Or when zeta is more than 1, or equal to 1, then the response would be ऐसा होगा response. Correct? Critically damped पे थोड़ा सा ये ऐसा हो जाएगा, but over damped पे ऐसा होगा. So this is over damped and this is critically damped. Here this situation is under damped and this situation is undamped sinusoid. Constant amplitude undamped. Is that okay? Yes, sir. So आपने एक चीज नोट की, साइन वेव कब बन रही है सर्किट में? When zeta is 0. When zeta is 0, what happens to this differential equation? Differential equation transforms into this s square plus omega n square equal to 0. Is that correct? Yes, sir. Okay. Now having understood the basic, that under what situation, what would be the pole zeros pole's location when it generates sine wave. Now we can move further, and I'll ask you to recall this circuit which I gave you yesterday in the test. Remember this? Yes, sir. And it was asked to find out what kind of filter it is and what are those filter parameters. R, C, R and C, right? This happens to be VO and this I took as VI. So VO by VI, if you work out, आप कर सकते हो, निकाल सकते हो VO by VI. मैं निकालूंगा नहीं.
इसको Z1 मान लो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ RC. इसको Z2 मान लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ RC. And VO by VI you can write down as what? Z2 over Z2 plus Z1. Is that right? अब अगर Z1 और Z2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा इस तरह का. डिनोमिनेटर ऐसा मिलेगा S स्क्वायर प्लस 3 बाई RC टाइम्स S प्लस 1 ओवर R स्क्वायर C स्क्वायर. और न्यूमरेटर में क्या मिलेगा? वन ओवर RC टाइम्स S. So इसको देखते ही you can immediately comment about what kind of filter it is. What kind of filter it is? Band pass. It is a second order band pass filter, correct? और आप इससे जो different filter parameters हैं आप तुरंत बता सकते हो. What are those filter parameters? Look, this is nothing but omega naught by Q naught. What is this? This is nothing but Cannot square. ओमेगा नॉट स्क्वायर. तो पहला फिल्टर पैरामीटर क्या निकला? फर्स्ट फिल्टर पैरामीटर इज ओमेगा नॉट विच इज 1 ओवर RC. और इससे यू कैन फाइंड आउट F नॉट इन हर्ट्ज विच इज 1 बाई 2 पाई RC. दूसरा फिल्टर पैरामीटर निकला Q नॉट. Q नॉट क्या होगा बताओ? इफ ओमेगा नॉट इज 1 बाई RC and omega naught by Q naught is 3 by RC, then what will be Q naught? 1 by 3. 1 by 3. Okay, then I have already also told you to अगर आप इस बैंड पास फिल्टर का रेस्पॉन्स प्लॉट करोगे तो रेस्पॉन्स कैसा होगा? ओमेगा वर्सेस if I writing this as TS, so mod of T. So if you plot the response is like this, and this is what we call omega naught. और इस सेंटर फ्रीक्वेंसी पे जो गेन है, that gain is what we name as H naught. H naught क्या होगा बताओ? Coefficient of S in numerator divided by coefficient of S in denominator. What that turns out to be? By 3. 1 by 3. Okay, H naught is 1 by 3. So this gain is 1 by 3. Right? You can also find out bandwidth. 1 by 3 का 0.707 ले लो और उसके बाद ऐसे करो and then find out this. This is what is going to be omega naught by Q naught. Is that okay? तो एक किस्म से ये फोर्थ पैरामीटर भी आता है जिसे हम कह सकते हैं बैंडविड्थ, which is actually omega naught by Q naught. इस सर्किट के केस में इसकी वैल्यू है 3 बाई RC. Is that okay? Yes, sir. Yes. तो आप ये पैरामीटर नोट करो कि इसका क्वालिटी फैक्टर 1 बाई 3 है, गेन इसका 1 बाई 3 है, और जिस फ्रीक्वेंसी पे गेन 1 बाई 3 है वो है 1 बाई 2 पाई RC. ठीक है? Now let me move to the next page. Okay, so what I will do, मैं फिर से वही फिल्टर बनाऊंगा. अब ये जो आउटपुट है ये मैंने एक
ठीक है, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? इसको मैं अगर R1 मान लूँ, इसको मान लूँ ट्वाइस R1, तो ये क्या बन रहा है? नॉन इन्वर्टिंग स्कीमेटिक ट्रिगर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, श्मिट ट्रिगर नहीं है। श्मिट ट्रिगर में पॉजिटिव फीडबैक होता है। यस सर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब इस एम्पलीफायर का गेन कितना है बताओ? बोलो। This amplifier, how much is the gain? If this is VO, and here I am writing as, let us say, V. So VO by V is how much? 1/3. No, 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 no. 3. 3. Gain is 3. Perfect. VO by V is 3. So VO by V is 3. Correct? And if this is VI, V by VI is how much? V by VI is, जो अभी हमने लिखा, 1 by RC S square plus 3 by RC into S plus 1 over R square C. Is that correct? यस सर। अब टोटल VO by VI क्या हो जाएगा? Product of the two, right? यस सर। VO by VI will be equal to what? V by VI times VO by V. और ये इसलिए कि एम्पलीफायर इज नॉट लोडिंग दिस सर्किट। ये जो इधर फिल्टर है, दिस फिल्टर इज नॉट बीइंग लोडेड बाय द एम्पलीफायर। रीजन कि यहां से कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है। देयरफॉर ये जो ट्रांसफर फंक्शन है फिल्टर का, ये चेंज नहीं होगा एम्पलीफायर को लगाने से। इज दैट ओके? यस सर। So finally, what is VO by VI? VO by VI is now 3 by RC into S, क्योंकि 3 इसका multiplied by ये जो न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर पे हो गया S square plus 3 by RCS plus 1 over R square C square. ठीक है? Is that right? VO by VI is now this. अब हम क्या करते हैं? Now I am going to connect the VO with VI, and when I do so, that means what I am doing, I am making VO equal to VI. Is that okay? By shorting output and input, what I am doing, I am making VO equal to VI, isn't it? So now put this equal to 1. VO by VI is now equal to 1. Is that okay? Yes, sir. अब जरा इस पूरे को देखो। This is now equal to 1. साइनोसॉइडल वाली बन जाएगी सर। तो अब क्या हो जाएगा? इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा S स्क्वायर प्लस 1 over R square C square.
equal to 0. ठीक है, तो इससे ओमेगा नॉट या ओमेगा एन क्या मिलेगा, 1/RC, या एफ नॉट विल बी 1/2πRC. So now you understand that how to make the coefficient of S. आइडिया क्या था कि आपको जीटा को 0 करना था. That means coefficient of S should be made 0. And in order to do that, what I did, हमें यहाँ न्यूमरेटर में 3 लाना था. न्यूमरेटर में 3 लाने के लिए हमने 3 गेन का एम्पलीफायर यूज कर लिया, और उसके बाद 0 करने के लिए हमने VO को VI से कनेक्ट कर दिया. VO को VI से कनेक्ट करते ही ये 1 हो गया, एंड देन इट हैज बिकम like this, and then I have a sine wave is now generated. This circuit is now generating a sine wave here. उस sine wave की frequency क्या है, F naught, and F naught is 1/2πRC. इसका कुछ amplitude भी है, some amplitude. Let us say I'm writing that amplitude as V1. अब because this output is V1, अब ये V क्या होगा, V will also be a sine wave, but of 1/3 amplitude, same frequency but 1/3 amplitude, क्योंकि एम्पलीफायर का गेन 3 है. एंड बिकॉज Vi is equal to Vo, तो यहां पर एग्जैक्टली यही साइन वेव यहां पर है. And because the two inputs are virtually short, so if this is V, this is also V, तो same sine wave 1/3 amplitude की यहाँ पर भी. So you see sine wave everywhere. Is that okay? Yes, sir. So now you understood how the sine wave can be generated. Take a band pass filter, right? Find out its transfer function. Figure out what is the gain of this. Figure out the numerator coefficient of S. इन दोनों को इक्वल करने के लिए डिसाइड करो अब एम्पलीफायर कैसा लगाएं जिसका गेन ऐसा हो कि VO by VI equal to 1 करते ही वो S का कोफिशिएंट 0 हो जाए. In order to make that happen, correct? अब मैं अगले पेज पर आता हूं. सेम सर्किट, सबसे पहले बैंड पास फिल्टर, और हमें पता है बैंड पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन क्या है, हमने पहले निकाल रखा है. हमें पता है कि इसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी पर इसका जो गेन है वो 1/3 है. अब हमें उसी हिसाब से इसके आगे एम्पलीफायर लगाना है, राइट? एम्पलीफायर हमने इसको लिख दिया R2, इसको लिख दिया R1, RC RC. और हम कह रहे हैं कि ये जो सर्किट है, अगर हम इसके आउटपुट और इनपुट को कंबाइन कर दें, देन इट जनरेट साइन वेव. ये कब साइन वेव जनरेट करेगी? when R2 is equal to twice of R1. Is that okay? Yes, sir. So this is called condition of oscillation. When this condition of oscillation, short में इसको हम CO बोल सकते हैं, CO. When this CO is satisfied, then this circuit will oscillate and will produce a sine wave. उस समय what will be frequency of oscillation? In that case, omega naught will be 1/2πRC.
RC. This is called FO, frequency of oscillation. ठीक है, तो किसी भी ऑसिलेटर को एनालाइज करने में आपको ये दो चीज बतानी होती है. पहला बताना होता है what is the condition of oscillation, and once that condition is satisfied, then what is the frequency of oscillation. Correct? Is that okay? Yes, sir. ये जो सर्किट है, this circuit is called Wien-Bridge oscillator. Wien-Bridge oscillator. और ये सर्किट बुक में आपको इस तरह से बनी हुई दिखती है, नॉट लाइक दिस जैसा मैंने बना रखा है. वो स्पेस कंजर्व करने के लोग ऐसा बनाते हैं. सबसे पहले लोग बनाते हैं, दिखाते हैं कि ये एम्पलीफायर पहले बना देते हैं ये लोग. ठीक है, और फिर आउटपुट को ऐसे करके तो कुछ इस तरह दिखाते हैं, R2, R1, RC, RC. I hope you will agree, both are same circuit. Is that right? दोनों ही ठीक हैं, सेम सर्किट हैं. Yes, sir. Yes, sir. Wien-Bridge oscillator. So this is Wien-Bridge oscillator. इसमें एक ब्रिज है, और ब्रिज, आई होप यू कैन सी द ब्रिज. ब्रिज में एक R और C सीरीज में है, और दूसरे में R और C पैरेलल में है. उसके बाद ये करके ये वाला पॉइंट तो ग्राउंड हो गया. ठीक है, और यहाँ पर ऑप एम्प लग जाता है. This goes here, this goes here, and this goes here. That's a Wien bridge. Is that right? Yes, sir. तो ये वीन ब्रिज ऑसिलेटर है. वीन ब्रिज ऑसिलेटर से साइन वेव जनरेट की जा सकती है. आपको बता दिया व्हाट इज कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. Is that okay? Now let me show you other. Suppose I'm using, instead of R1 and R2, I'm using Z1 and Z2. इसी वीन ब्रिज ऑसिलेटर की बात कर रहा हूं अभी मैं. ठीक है, naming this as Z1, Z2, this as Z3 and Z4. I ask you to find out VO by VI. यहाँ पर V मान लो. सबसे पहले निकालो
VO by V. What will be VO by V? 1 plus Z4 by Z3. Is that okay? Yes, sir. Then what will be V by VI? V by VI will be Z2 upon Z1 by Z. अब मल्टीप्लाई कर दो दोनों को. That will be VO by VI. So VO by VI happens to be what? Z2 times Z3 plus Z4 divided by Z3 times Z1 plus Z2. Is that okay? Yes, sir. अब मैं क्या करता हूं, ऑसिलेटर बनाने के लिए हमें इसको क्लोज लूप में डालना पड़ेगा. देन VO इज इक्वल टू V1. अब ऐसे में व्हाट विल बी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? Z2 Z3 plus Z2 Z4 equals Z3 Z1 plus Z2 Z3. Is that right? Yes, sir. Finally, Z2 Z3 cancels, and what you have is now Z2 Z4 minus Z1 Z3 equals to 0. That is now characteristic equation. ठीक है. अब आपको Z1 Z2 Z3 Z4 ऐसे चूज करना है, वहां पर R और C लगाना है. ऐसे चूज करना है कि आपको एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिले. किस टाइप का? S स्क्वायर प्लस A माइनस B टाइम्स S प्लस C equals to 0. Transform this into this by choosing appropriately. एक तो आपको पता है कि Z1 को हम मान लें सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R एंड C, Z2 को मान लें पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R एंड C, है ना? Yes, sir. और यहां हम रखते हैं रेसिस्टर Z3 Z4 पे. करेक्ट. नाउ पॉइंट ये है, मैं आपको असाइनमेंट दे सकता हूं कि इंस्टेड ऑफ चूजिंग द पैरेलल आर, क्या ऐसा नहीं है कि कुल कितनी पॉसिबिलिटी हैं सीरीज आरसी पैरेलल आरसी को जगह जगह रखने की? अगर हम Z3 की जगह पे पैरेलल आरसी रख दें, इससे क्लू सर अगर हम Z4 की जगह Z1 रख देंगे सीरीज में, तो सर और- हमारा वो इन्वर्टिंग बन जाएगा. एग्जैक्टली फिर भी ऑसिलेटर बनेगा. समझ रहे हो ना? यस सर. तो मैं आपसे सर इसमें तो हमारी साइनसॉइडल में सर जो फेज शिफ्ट होगा वो 180 से शुरू होगा फिर. व्हाटएवर पॉइंट ये है कि इस सर्किट, जो ये जनरल सर्किट दिख रही है Z1 Z2 Z3 Z4 की, इसमें वीन ब्रिज के कई सारे वेरिएंट छुपे हुए हैं. सर आप ऐसा कर सकते हो, ये भी करके देखो दैट. ओ खत्म, टाइम हो गया. Yes, sir. ओके मैं खत्म कर रहा हूं. आप ऐसा करो कि Z1 को सीरीज आरसी कर दो, Z3 को शंट आरसी कर दो, और Z2 Z4 सिर्फ रेसिस्टर रखो. फिर देखो क्या होता है. सब्स्टिट्यूट those things here and then find out if you get a CE like this. तो इसमें ये 4 आर्म्स से कुल 16 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं.
है ना, 2C4। क्या होगा? 4C2 है? सर, 4C2 होगा। हाँ 4C2, सॉरी 4C2। 4C2 से आप देखो निकाल गए हो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, और उनमें कितने ऐसे हैं जो ऑसिलेटर बनाते हैं। ऑसिलेटर कब बनेगा? जब एस का कोफिशिएंट डिफरेंस टर्म आएगा। दैट डिफरेंस टर्म विल गिव यू कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। ए इक्वल टू बी is what is called condition of oscillation, and if that is satisfied, then omega naught will be under root c. Is that okay? The frequency of oscillation. So please find out इस 16 में से कितने ऐसे हैं जो एक तो हमने बता दिया आपको, एक तो हमने पूरा एनालाइज करके बता दिया, बाकी फाइंड आउट करो कितने इसमें पॉसिबल छुपे हुए हैं वीन ब्रिज ऑसिलेटर के सर्किट। So now here I stop. You may kindly mark your attendance quickly. Sir, some of us had an issue with the marks of CT1 and some with CT2 also. क्या इश्यूज हैं? सर CT1 के जैसे मेरे था कि मैंने एक दो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे थे, लेकिन मैंने उसके अंदर लिख दिया था कि कैन नॉट आंसर। अब वो दिखा है कि वो रॉन्ग है, वो है एक इशू। और एक एक दो बच्चों को और कैन नॉट आंसर का क्या कर सकते हैं बताओ? व्हाट कैन आई डू कैन नॉट आंसर का? तो ये तो अटेम्प्ट नहीं हुआ था ना। नहीं, कैन नॉट आंसर को मैंने रॉन्ग में नहीं दिया होगा। सर जो आंसर दे नहीं पाए थे उन क्वेश्चंस के भी नेगेटिव हो गए जो हम देना नहीं चाहते। नहीं, ये आप कैसे कह रहे हो? इसको सर सब फॉर्म करने में में सर मैंने जो बहुत गूगल फॉर्म, बहुत फिर आप बहुत फॉर्म मेहनत की। आप कॉलेज आकर के पूरा देख लेना, मैं दिखा दूंगा आपको कैसे मैंने इसको सारा कैलकुलेट किया है। सर मुझे मेरे भी डाउट लग रहा था। मेरे पास सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। आई हैव नॉट डिस्ट्रॉयड एनीथिंग। ओके आपके रेस्पॉन्सेस पूरे मेरे पास एक्सेल शीट में हैं, कहाँ आपने क्या लिखा, कहाँ आपने क्या नहीं लिखा है। CT1 के मार्क्स को फाइनल करने में मुझे पता है मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है। इट टुक ऑलमोस्ट 2-3 days फॉर मी टू मेक दिस रिजल्ट। CT2 तो बहुत आसानी से कल ही बन गया था। CT2 में कोई दिक्कत नहीं थी। Please mark your attendance now.